Hey folks, out for a walk in the morning. बहुत दिनों बाद आई हैव कम आउट फॉर अ वॉक. टाइम ही नहीं मिला. कल मैंने रात पे ही सब कुछ प्लान कर लिया आज का, इसलिए आई हैव सम टाइम लेफ्ट. सो नाउ आई विल spend that time walking a little bit and then moving forward जिम शुरू करूँगा थोड़े दिनों में. I've been stopping all of this because थोड़े बहुत काम थे where I was supposed to be busy, super busy in the morning. So probably I won't be able to join the gym. But इसके बाद I will join a gym here. मेरी कंपनी की जैकेट मुझे मिल नहीं रही है. So I had to wear this jacket for my office today. It doesn't smell, so that's good. And आज काफ़ी सारा काम है. आई हैव टू मेक अ पिच अबाउट द प्रोडक्ट. मतलब पिच बना दिया, मेरे को लिख के रखना ताकि इट्स ईजी फॉर मी टू रेप्लिकेट. एंड अपने सेल्स हेड से बात करना है कि हाउ डू आई गो अबाउट दिस होल सेल्स थिंग, राइट? हाउ डू आई वर्क विद द सेल्स टीम, बिकॉज आई हैवंट वर्क विद देम. सो उनकी हेल्प चाहिए होगी टू कोऑर्डिनेट विद द टीम while I'm working on the pitch. So exciting work today. New काम मिला है. Let's see. All right. And a cat sat on my bike. All right, I'm at the office now. जाके खाना खाऊंगा. बहुत जोर की भूख लगी है. ठीक है ना? Yeah. Let's see what's there today. This vada pav today. मैंने और दो ले लिए क्योंकि मेरी पहचान है. About how do you work with a team which is very ops heavy. मतलब ऐसी टीम जहाँ पे operations वाला काम काफ़ी सारा है, मतलब repetitive task काफ़ी है, right? And the biggest learning in that is तुम ऐसा SOP बनाओ पहले. What is SOP? Standard Operating Procedure. Plus step by step all the information, all the action a person ops resource should do to reach to the final goal they are hired to do. So that's what an SOP is. So you have to create an SOP that is very bulletproof. And वो SOP तुम्हें खुद को multiple times काम करके बनानी पड़ती है. So you will have to go the way, know the way, and then show the way, right? उसके बाद if you since you are at a managerial level, you want to manage all of these people, you have to make sure that effort is calculated. जो भी effort डाल रहा है आपका ops resource, that should get calculated, because that's the only way you can manage those people, right, that who are working under you, with you, right? So once you know कि इतना effort जा रहा है, then you can at least compare and understand if there is a problem in the steps, there is room for improvement for that person. So आपको effort tracking करनी पड़ती है, साथ साथ में outcome tracking भी करनी पड़ती है. So when you're creating an SOP, you're making sure that you have an effort tracker and an output tracker, right? Outcome tracker में आपका essentially ये बता रहा है कि end goal पे पहुंच रहा है कि नहीं person. So ये दोनों effort and outcome, ये दोनों ट्रैक करेंगे आप, तब आपको समझ जाएगा कि is the team performing nicely or not. And if they are not performing nicely, you can pinpoint from these two metrics कि किधर gap है. Then you can find that weakest link and then you can work on them. So that's how an operations team works, right? I will tell you more about other stuff later on. I have work to do now. Alright guys, just got done with my work. Created a lot of processes today and got some free food as well. आज
आज आई थिंक मैकडोनल्ड्स मिला था एंड मैं फाउंडर का घर का खाना भी खाया. सो या 11:30 हो गया. आई एम लॉगिंग ऑफ फॉर द डे. आई एम डन विद मोस्ट ऑफ माई टास्क एंड प्रिपेयर्ड what I'm going to do tomorrow. So I'm covered. Think good enough.